It is now. Yours okay? Om Shri Ganeshaya Namah. So it works. Ma'am, we'd love to hear from you on just what would you like to say to the audience. A very good afternoon to everyone. सबके हुनर को मेरा सलाम. क्योंकि हुनर हम सब में है, पहचानने की देर है. I just feel what Nishta said. जब निष्ठा इस आइडिया के साथ आई थी मेरे पास, I was so enthralled and I was so excited क्योंकि we live in a country like India जहाँ पे 34 करोड़ महिलाएं हैं जो educated है लेकिन financially independent नहीं है. तो I feel जब हम इस आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, तो उसको सपोर्ट भी करना चाहिए. तो स्किल अगर हम सब में है, मैं औरतों की बात कर रही हूँ, और क्योंकि मैं इंडिया में रहती हूँ और मेरा जो माइंड सेट है और जो मेरे वैल्यूज़ है वो थोड़े से मिडिल क्लास है, मैं भी 2 बार सोचती हूँ कि मैं कुछ अगर सीखना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ, मेरा कितना वक्त लेगा वो. So I feel sometimes most of us don't do things that we want to do because of the time constraints. So Hunar, I feel, works for me as a woman who wants to learn and hone her skill and her talent from the confines of her home. तो आप अपने घर से सीख सकती हैं, अपने टाइम पे, अपने लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंस के साथ, and you get a government certificate for it. And I feel कि औरत के लिए आर्थिक स्वतंत्रता जो आप बात कर रही थी, वो उतना ही ज़रूरी है जितना एक बच्चे के लिए पोषण. तो आई रियली फील कि हम उसे अंडर वैल्यू करते हैं. एंड आई रियली फील मोर देन बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये जब हम बात करते हैं कि औरत की जगह कहाँ है, कहाँ पे होनी चाहिए, अगर आप मुझसे पूछिए तो मुझे लगता है कि औरत की जगह हर उस जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे डिसीजंस होते हैं. एंड आई रियली फील दैट इज ट्रूली द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन. एंड औरत के लिए खुद पे भरोसा ही उसकी ताकत है. एंड आई फील मोस्ट ऑफ द टाइम्स वुमेन फील के उनमें वो टैलेंट है, लेकिन क्या उस स्किल को वो एनहांस कर पाएंगे, उस स्किल को क्या वो कैन शी मेक इट इनटू अ बिजनेस. तो हम उन लोगों के लिए वो सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए तैयार है. एंड दैट्स व्हाट निष्ठा वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. तो जब वो आई थी मेरे पास, तो वो आई थी इस एंगल के साथ कि वो मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगी, और फिर मैंने आइडिया सुनने के बाद कहा कि मैं आप में इन्वेस्ट करना चाहूँगी. सो आई रियली लव द आइडिया बिकॉज आई फील आप सिर्फ, अगर हम यहाँ पे सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं. आई फील व्हेन यू एडुकेट अ मैन, यू एडुकेट अ मैन, बट व्हेन यू एडुकेट अ वुमन, you educate an entire generation. So I feel it's also nation building, and I love the idea, Nishta. और बहुत मेहनत की है निष्ठा ने इस ब्रांड पे, and today we very proudly boast of having 30 lakh women as part of the Hunar community, and successful women, some of them out there. देर आए दुरुस्त आए, and I'm totally pro it. So yes, congratulations, Nishta. Thank you so much. Actually, I don't know if you remember this, ma'am, but when I first came to meet you, you had said a line. Shall I remind you? मैं बहुत बोलती हूँ. क्या बोल चुकी हूँ मैं पता नहीं. आपने कहा था हुनर हम सब में होता है, बस उसे रिकॉग्नाइज करने की देरी है. एंड जस्ट दैट वन लाइन मुझे इमीडिएटली रियलाइज हो गया था कि यू अंडरस्टैंड दिस वुमेन सो डीपली, यू अंडरस्टैंड आवर मिशन सो डीपली, और आपको बहुत एंड यू न्यू एग्जैक्टली द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस दैट द वुमेन ऑफ टुडे फेस in order to follow their dreams, forget about the other things, right? Just to be able to follow their dreams. Your support when you decided to come on board as an investor
it really, really, really motivated our entire team, all our students who were so excited, and it was really such a great thing you did. You know, I didn't invest in you because I wanted to make money. You know, when you talk about investment, We all hope you do, though. I hope so too. But like your mom very beautifully said, sometimes while you're making billions, you also want to touch a billion hearts. And I hope in this journey that we've both taken together, we're able to do that. And I feel ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में. हम बात तो करते हैं कि हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी है, और फिर हम बात करते हैं कि अरे वुमेन को सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें और सपोर्ट करना चाहिए. वी विमेन आर स्ट्रॉन्ग, हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये महिलाओं को समझना ज़रूरी है कि दे आर स्ट्रॉन्ग, यू नो. एंड आई जस्ट फील कि बेहतर बनना ज़रूरी है, साबित करना ज़रूरी नहीं है. So if you want to become financially independent after honing your skill, that's your choice. But to hone your skill is important. And I feel उसे encourage करना बहुत ज़रूरी है. That's it. Ma'am, all of our students, I know they'd love to hear your thoughts on this. आपके, in your opinion, how important do you think overall all of these things are for an Indian woman and for our country at large? Gaining recognition, becoming financially independent. How do you think that plays into a lot of things? Well, I don't know about gaining recognition, but I think it's important for every woman to feel a sense of self-worth. Because when you have self-worth, you will not let somebody else take you for granted. When you have self-worth, you will bring your children up differently. When you feel self-worth, you will also have confidence. और confidence का होना बहुत ज़रूरी है. और जब आप, you know, one thing is honing your skill, but when you have confidence, it makes you better at life skills. And I just feel that every woman must be given the opportunity to become a better version of themselves. And I see a lot of women there nodding their heads because I think you are the first role model your children have. And जैसे आपके बच्चे आपको देखेंगे, परसीव करेंगे, उनका जो नज़रिया है वो लाइफ को लेकर, और अपनी ज़िंदगी में अगर आपका बेटा है, so I want my child, I want my son to grow up and not have a problem with his wife working. I want my daughter to see and learn that mama goes to work and comes back home और हमें भी संभालती है, तो वो भी दोनों चीज़ों में सक्षम हो सकती है. So I want her also to be independent. So I think it's very important to realize your own potential and do the balancing act. I'm not saying कि आप सिर्फ सेल्फ रिलायंट हो जाएं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं और फिर घर को मतलब इग्नोर करें. बिल्कुल नहीं, मैं दोनों संभालती हूँ और मैं बहुत प्राउडली मैं कहती हूँ मैं पहले माँ हूँ. एंड आई एम अ होम मेकर एंड देन आई एम अ प्रोफेशनल, बट आई डू इट ऑल. यस, इट्स हार्ड, बट जो हैप्पीनेस मिलती है ना मुझे एट द एंड ऑफ द डे, कि मैं वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ. And I'm able to sleep because I'm so tired at the end of it. It just gives me that happiness that nothing else can replace. And it's amazing, ma'am. I think women also, when you educate a woman, you educate not just the woman, her family, her community. So, you know, all of our entire community, you, me, all of us are working towards making women stronger. And I think you are the one actually who told me that it is strong women who actually focus on making women stronger. So that is one thing I learned from you. Is there a message that you have for all of the women of India today? Just, you know, everyone has a skill set. Just recognize it. But to hone that skill, you have to have the will.
So पहले तो मन बना लो. And somebody very beautifully explained to me that it's very important, आदमी हो, औरत हो, it's important to learn a new skill every 6 months. It just keeps your mind more active and it'll make you feel happier about yourself. So learn a skill, put it into play and be happy. That's it. Thank you. And from me to all the women out there, believe in yourself. Take that first step, that little step. A lot of your stories, Shilpa ma'am has beautifully narrated and really communicated your stories beautifully. We are very excited to show this to you. So ma'am, एक चीज मैं बोलना चाहूँ, सॉरी निष्ठा, आई वांटेड टू जस्ट से इट एंड कन्वे इट. हम लोग एज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो निष्ठा बोल रही थी, बहुत सारी महिलाएं बात कर रही थी वहाँ पे पीछे कि अब क्या है, अब तो एज हो गई है. मतलब 35-year-old women were saying कि अब तो हमारे बच्चे करेंगे जो करेंगे. अरे अचीवमेंट के लिए कोई एज नहीं होता. आप बस ठान लो कि आपको अचीव करना है, आप किसी भी एज में अचीव कर सकती हैं. तो यू जस्ट हैव टू मेक अप योर माइंड एंड बिलीव इन योर सेल्फ लाइक निष्ठा सेड, एंड यू सी द स्काई इज द लिमिट. बहुत ठंड नहीं है यार, बहुत ठंड है ना. आप क्या कह रही कि मैं हॉट हूँ? थैंक यू. all right. So ma'am, if you press a button, the movies will release. अब ये बकवास सवाल करने वाला है अभी. मुझे ये आभास हो रहा है कि आने वाला है ऐसा कुछ. नहीं, पहले we are going to actually have our students come up. Can all our students come please? So these are students from 28 different states, ma'am, and they've come over to take a picture with us. आप लोग पीछे, हम थोड़ा रेनोवेट करते हैं. Yeah, we can move around. हाँ ठीक है, यहाँ से खींचो. 5-6 फोटो यहाँ से खींच लो. अरे यहाँ से खींचो, ये तुम्हारे पास कैमरा जूम होता है यहाँ से. ये देखो हो रहा है ना. हाँ यहाँ से खींच लो. मम्मा को बेस्ट फोटो खींच के दोगे तो तुम्हें ढेर सारे चॉकलेट मिलेंगे. कौन सी है मम्मा तुम्हारी? अच्छा ठीक है, रुक जाओ. करते हैं कुछ. माइक नहीं चल रहा है. Hello. I would like to thank all of you for attending this milestone event and being part of our journey so far. We hope each one of you will help us reach every Indian woman who seeks independence and recognition she deserves. Let us come together to spread our message. सीखने से सफलता पाने तक, हुनर तुम्हारा साथ हमारा. Thank you and goodbye.
Lunch is served. Please have a good meal and a great year ahead. Thank you. Shake hand. You want to shake hand? I want to shake hand first.